A very good morning to all of you. It is with great pleasure that I welcome our Honorable Health and Family Welfare Minister, respected Dr. Harsh Vardhan, to this event. I would also like to welcome the Honorable Minister of State, Mr. Ashwini Kumar Chaube, who is joining from Buxar. I believe there's some problem with the camera, but he is joining soon, shortly. A very warm welcome to all the participants joining us today. On behalf of the Food Safety and Standards Authority of India, I welcome you all to this webinar on the occasion of World Food Day 2020. World Food Day is celebrated every year on 16th October to create awareness around health and sustainability and to remind us that our actions are our future. Each year, a theme is designated for this day to bring in sharper focus on mitigating specific problems. This year's theme is Grow, Nourish, Sustain Together. I'm deeply honored to introduce the dignitaries and officials who are present with us today. A warm welcome to the Honorable Union Minister for Health and Family Welfare, Dr. Harsh Vardhan. The Honorable Minister of State for Health and Family Welfare, Shri Ashwini Kumar Chaube ji. Shri Arun Singhal, Chief Executive Officer, FSSAI. Dr. Rodrigo H. Offrin, Director Regional Emergencies, WHO Regional Office for Southeast Asia. We are also joined by senior officials from the Ministry and from FSSAI, including our regional directors. We are joined also by the State Food Safety Commissioners, other stakeholders from the industry, associations, academia and research organizations, as well as representatives from various international organizations. To begin the session, I request and invite Shri Arun Singhal, CEO FSSAI, for his welcome address. Sir, over to you, please. Thank you. A very good morning to all the participants. I would like to begin by expressing my gratitude to the Honorable Minister and the Honorable Minister of State for joining this event today. Sir, we are deeply grateful for your continued patronage and support to the cause of food safety in the country. You would recall, sir, last year we had a real celebration as against a virtual celebration this year, and I sincerely hope next year we'll have a grand real celebration again. But during that celebration, sir, you had come to the FDA Bhavan and you had given a very inspiring talk to all of us. At that point of time, sir, we launched 2 or 3 new concepts. One was the concept of food safety mitras. Since then, sir, we have developed 6 modules for training of food safety mitras, and over 10,000 youngsters have taken these courses online. That is followed by a 1-day training and test. So, as far as the test is concerned, the initial passing percentage was quite low. Till now, about 1200 people have taken this test and about 600 have qualified. The pass percentage is gradually improving now, sir. And these people who have been selected as food safety mitras have so far facilitated about 1200 food businesses in registration. So they are actually aiding and assisting small food businesses, which was the intended outcome. Sir, FSSAI had also tied up with NASSCOM last year to set up a interactive portal for donation of surplus food. That portal was prepared and it is ready for launch. It is being taken up as a pilot in the state of Delhi, and depending on the results, it will be scaled up in the entire country. Another small initiative was Eat Right jackets. Sir, you had seen them when you had come to FDA Bhavan. Those Eat Right jackets are being procured, about 4,500 of them, sir, and they are being given to each food safety officer and to each designated officer. Apart from that, sir, you would recall there were 2 films with celebrities, Mr. Virat Kohli and Ms. Juhi Chawla, which were launched last year. They have also gained traction on the social media and many people have seen them. They have conveyed the message of eating right, eating healthy. So this year's theme is Grow, Nourish, Sustain Together. And if you look at it closely, sir, we have a Eat Right India initiative, which is founded on 3 pillars, of which the second pillar is eating healthy and the third pillar is eating sustainable. Eating safe, eating healthy, eating sustainable. So the Eat Right in India initiative is perfectly in sync with the theme of this year's World Food Day, and we intend to pursue Eat Right India initiative with greater vigor this year. We have already launched a Eat Right challenge in which about 200 districts are participating in the country,
We are today, sir, initiating a Eat Right challenge for smart cities in collaboration with the Smart Cities mission, and we have launched the Eat Right School challenge. So we are including all segments of society and various ministries in giving a larger outreach to the Eat Right India movement. In particular, sir, during the ensuing year, we wish to focus on three things, sir. The first is about promoting nourishing food. We want to discourage the intake of empty calories or junk food, as it is called, sir. And for that, we have launched some initiatives. You would recall, sir, the school program has been initiated where junk food is now prohibited in schools. So that is a settings-based approach. In schools, we have said that junk food cannot be sold and children should get healthy, wholesome food. Another concept, sir, which has been explored is the front of pack labeling for sugar, salt and fats and trans fats. That was published as a draft last year, but reaching a consensus on the thresholds to be used was difficult, sir. It was elusive. So we had commissioned a study, sir, by the Nutrition Alchemy on the levels of fat, sugar, salt and trans fat in various foods. That report has been received in September, sir. And the WHO had also kindly agreed to provide scientific evidence to support front of pack labeling and its impact. And they have undertaken 4 assessments to help us in this. The country head, Dr. Ofrin, is present today. I would request him to kindly expedite these assessments so that we can proceed. What we have in mind, sir, is to set up a consultation mechanism in which our scientific panel would play the key role along with civil society and with industry members, and then discuss the thresholds to be used for labeling. Either we go in for a traffic light system or we go for an energy star. So for instance, the BE stars you see on appliances, 3 stars, 4 stars. So we could go for a concept of salt stars, sugar stars and fat stars. So if something is 5-star in fats, it is a good product. It doesn't have too much fat. Again, for that we need thresholds. So consensus has to be formed on the thresholds, sir. We will work on that very sincerely this year and try to reach some consensus, sir. The second important theme which we wish to pursue this year would be trans fat elimination, sir. And that is, it is a mix of having regulations and hand-holding the industry, sir. We have organized, starting today, sir, we will start a series of technical webinars with industry to showcase the industries which have already achieved trans fat elimination. For instance, many chocolates in the country today are industrial trans fat free. So there are success stories, we want to share them. There are those who have planned to eliminate trans fat, we want to ask them to speak. There are those who face problems in eliminating trans fat, so the scientific community has to understand their problem and show them a way out, sir. We recently conducted a market survey to see what is the level of trans fat prevalent, and we found that our regulation says that in oils and fats the maximum trans fat can be 5%. So there were some which were at 4.5%, 4.25%, 4.35% trans fat, but there were others which are already at 2.5%, 2.25% and so on and so forth. So our objective, sir, is to gradually by the year 2022 come down to 2% trans fat in oils and fats, sir. And we also did a market survey of processed food, sir. And there have been surveys by various organizations in the past. It was interesting to see that even in samosas or jalebis or imartis you can achieve 2% trans fat. It has been achieved. Trans fat as a percentage of the fat contained in a product should be less than 2%. So that is another regulation that we have proposed, sir. So even that is achievable for bakery products, for samosas, for jalebis. It is possible for all, sir. So it's a question of the industry coming forward to do it with a sense of responsibility, and we should push through regulations, sir. So that will be another second focus area. And the third focus area, sir, would be fortification, in which we are saying that oil and milk should be compulsorily fortified, sir. That is our proposal. We are promoting wheat flour fortification in a major way. And sir, we are now initiating steps towards
mandatory fortification of rice in the country, sir, because rice is the staple food of 70% population, sir. And if we go for mandatory fortification of rice, we estimate that 35% of the anemia cases can be actually done away with. And the benefit to the country in terms of disability adjusted life years and the increase in productivity, increase in well-being, lower health costs would be immense, sir. So we will, sir, come with a proposal during the course of this year to consider, sir, at a later date, perhaps 3 years down the line, whatever period is fixed, mandatory fortification of rice. So that will be our third important thrust, sir. In short, sir, it is FSSAI's objective, core objective, to ensure safe and wholesome food, and we will continue working towards this objective, ensuring food safety compliance and promotion of healthy food. For this, sir, we need your blessings continuously, and we need cooperation of all the stakeholders. I would request all FBOs to join in this endeavor and make healthy food choices available for the public. It cannot be done by the authority alone, it cannot be done by one party alone. Everybody has to collaborate, and we must understand that it is our responsibility collectively to provide healthy food to the population. With that, I'll stop here. I think we have a busy schedule and limited time. So I'll stop here and let's take the program forward. Thank you, sir. Thank you for your address on this occasion and sharing the key thrust areas in the year ahead. I would now like to invite Madam Inoshi Sharma, Director SPCD FSSAI, to orient the gathering and outline the key launches that are awaited today. Ma'am, over to you, please. Thank you. Good morning, everybody. FSSAI, on the occasion of World Food Day, has certain launches which the Honorable Minister will kindly be doing it with us. So, can we have the next slide? So, sir, we have created this book called the Do You Eat Right book, which has practical ways in which people can adopt healthy eating habits in their everyday life. So I would request the Honorable Minister, sir, to kindly inaugurate the book. Next, please. Sir, we have also created guidelines for safe reopening of school canteens and messes in the COVID-19 situation. And in this regard, we have been partnered with Health Set Go, and FSSAI and Health Set Go have created these guidelines, sir. So we would request you for the launch of this book also. Next, please. Sir, we have also made a document on the daily recommendations and food fortification. Many times when we go to the states, a lot of concern regarding the RDA levels which are permissible and the effects of fortification of staples and how much is permissible is questioned. So this book will particularly help us in dealing with these issues. So, sir, I would request you for the launch of this book also. Next, please. And sir, finally, because of the settings-based approach that we keep talking about, in which people are at various campuses such as colleges, universities, institutions, hospitals, even jails and tea estates, we have created the Orange Book for the Eat Right campus. So, sir, we would request you for the launch of this book also. Next, please. Sir, the NetProfan has been, which is the association of, which is the network of 7 associations, has been extremely active during the COVID-19 period, and they have, through various activities, done a wonderful job. So what we've done is, sir, we have created this newsletter in which the activities of the various chapters will be showcased.
So sir, we will shortly be sharing this newsletter with you. Next please. We have sir also on a monthly basis conducted a lot of activities. For instance, we give a theme to the NetProfan chapters. We have almost 25 chapters across the country with all the 7 associations as members of this, ranging from our IDA, the Chefs Association, food technologists, public health officials, public health and nutritionists and dietitians, sir. So sir, what we had done was, these are sir the winners of the jingle competition which we had done during the Poshan Ma month. And for our various staples in wheat, rice, milk, oil and salt, and for children, these were the winners, sir, that we've identified. We had, sir, also kept a theme on food safety. This month, sir, we've kept it on high salt, fat and sugar. And sir, next month is on adulteration. Next, please. Sir, we have also, sir, we would also be grateful, sir, for the launch of the Eat Right Creativity Challenge for schools by you, sir. This particular challenge will be open from today till the 16th of December, in which students will be uploading their posters or photographs on our website, and then the best, sir, will be finally announced in January. So sir, we would request you for the launch also for this thing. Next please. And sir, lastly, in partnership with the Ministry of Urban Affairs, the Smart City Mission, we have decided to launch the Eat Smart Cities Challenge. Sir, after the elections are over, from the 10th of November, we will be doing it, in which we would request the smart cities to come forward and join in this challenge and scale up the Eat Right initiatives in these cities, because a lot of population, sir, has suddenly come into these cities. So if the Eat Right initiatives are implemented, it would be beneficial for all. So thank you so much, sir. Over to you, Subha. Thank you so much, ma'am. I would now like to invite Dr. Rodrigo H. Bufrin, Director, Regional Emergencies. Dr. Harsh Vardhan, Honorable Minister of Health and Family Welfare, the Government of India, Mr. Ashwini Kumar Chubey, Honorable Minister of State for Health and Family Welfare, Mr. Arun Singhal, CEO, Food Safety and Standards Authority of India, representatives from FSSAI, Ministry of Health and Family Welfare, state governments, esteemed colleagues, and all participants, good morning. It is really my privilege to be here with you on this occasion to observe World Food Day 2020. This year, the focus is very relevant. It is on looking at building back better to strengthen and improve food systems that are resilient to crises such as the one we are facing today. The agenda is aptly reflected in the theme, grow, nourish, sustain together. I truly believe that we are what we eat. So that at the very outset, do allow me to both thank and congratulate FSSAI for its leadership role and sustain the efforts in undertaking a host of initiatives to spread awareness about safe foods and healthy eating. Mahatma Gandhi said that it is health that is real wealth, not pieces of gold or silver. The COVID-19 pandemic has forced us to reflect, examine, and appreciate the very fundamentals of healthy living. Preserving access to safe and nutritious food is an essential part of the response to the pandemic. As we fight the pandemic, it is important to adopt healthier food choices. Cardiovascular diseases have become the leading cause of mortality in India. In 2016, cardiovascular diseases caused 28% of total deaths compared to 15% in 1990. Diet-related risk factors, including consuming foods containing industrially produced trans fats, are a major driver of preventable deaths due to cardiovascular disease. Among the key methods to tackle dietary risks, elimination of industry-produced trans fats is relatively straightforward, low cost, and a one-time policy intervention with significant long-term benefits. Eliminating artificial trans fats from the food chain can help eliminate the cost of 7%
of cardiovascular diseases globally. Hence, this is one of the 16 best buys advocated for tackling NCDs by WHO. In 2018, WHO called for the global elimination of industrially produced trans fats by 2023 and released the Replace Action Framework, which I'll talk about more later. Replace serves as a roadmap for countries to implement prompt, complete, and sustained information of industrially produced trans fatty acids from the food supply. In 2019, WHO released the first progress report, along with detailed implementation guidance to support governments to achieve that global target. This year, the second progress report to track and accelerate progress towards global trans fat elimination by 2023 was launched, and I will mention some of its highlights. So first, what is Replace? It's an acronym to review, that is RE, dietary sources of industrially produced trans fats. P is promote the replacement of industrially produced trans fatty acids with healthier oils and fats. Legislate or enact regulatory actions for its elimination. Assess and monitor trans fats content in the food supply and changes in trans fats consumption in the population. And that's where CEO was mentioning about the importance of thresholds so that we're able to measure. C is for create awareness of the negative health impact of trans fats, and E is to enforce such policy regulation. So that acronym of Replace is actually sets up the framework. As per the Replace 2020 report, India ranks 11th globally in terms of proportion of coronary heart disease deaths due to trans fat intake, with 4.63 coronary heart disease deaths attributable to trans fats intake. The availability of cheap, convenient, and highly processed foods that are appealing to the taste fuel the challenge of addressing dietary risks of NCDs in the country. Partially hydrogenated oils are often used in preparing the very tasty foods that we love, like as mentioned, samosas, for example, or pakwaras, and extremely popular savory snacks such as any of the namkeens that I also love, and sweets in India, which contribute a high amounts of trans fat to the diet. India has been, although that is the burden, India has been the frontrunner in adopting the best practices for the elimination of trans fats in the country, an achievement which is well recognized in this latest Replace report. The country scored a 3 out of 4 for instituting regulation transmitting trans fats in oils and fats to less than 5%, which is less restrictive than the recommended approach. I'm confident that with the next report, India shall secure the highest ranking, having finalized the regulation limiting trans fats to 2% in oils, fats, and even preserved foods. We are very excited about FSSAI's response in this regard, with their call to action of making India trans fat free in 2022, a year ahead of the global target. And that also marks the 75th anniversary of India's independence, which makes it also free from trans fat. It's a celebration of freedom from many things. WHO, along with Resolve to Save Lives, has been a proud partner of FSSAI in this endeavor, closely working with colleagues on accelerating best practice policy development in the country, sharing country experiences and success stories, supporting initiatives to create demand for trans fat-free products, and recognizing achievements made till now. Now is the time to build back better, considering where we are in this pandemic. And this investment in building back better and healthier food system by eliminating trans fats is a very big and critical step. Strengthening our assessment capacity to accurately test trans fat levels in products, including building appropriate standards for labs, expanding capacity on assessment, and ensuring quality assurance for accurate testing is very, very important.
We also need to design and implement an appropriate inspection strategy to assess compliance with trans fat regulation. That's part of the assess part. And last but not the least, we need to set up an information system and track indicators to compliance and non-compliance. The food industry is expected to actively contribute towards trans fats elimination for this goal of trans fat free by 2022 and to support the Eat Right initiative by FSSAI. And of course, the industry can play the role of a catalyst and active role in achieving the ambitious target by reformulating their products, increasing the supply and use of healthier alternatives responsible for labeling and responsible labeling and advertising. Healthy, safe, and nutritious food is of critical importance, and in all this, all stakeholders have a role to play. From all those verbs that comprise the replace framework. And in that, I really applaud the FSSAI and the Ministry of Health and Family Welfare for creating and enabling for food businesses to align their operating activities with national and international standards and for consumers to demand healthier, safer foods. Safe and healthy food contributes to good health, increased productivity, and improved life. FSSAI did to organize this consultation on the elimination of trans fat on World Food Day is a reflection of the high priority being accorded to this agenda. We are very committed to partnering with the government in making food systems healthy and combating the double burden of malnutrition, reducing morbidity and mortality due to diet-related diseases, and creating an awareness to enable people to make healthy food choices easier, leading to a healthier life. Thank you. I will now request, ladies and gentlemen, if we can have the keynote address from our chief guest, Dr. Harsh Vardhan, the Honorable Minister, Union Minister for Health and Family Welfare. Sir, over to you, please. श्री अरुण सिंगल जी, श्री डॉक्टर मनदीप भंडारी जी, सभी FSSAI के यहाँ पर उपस्थित और मेरे सामने वर्चुअली जितने भी ऑफिसर्स जुड़े हैं वो सब लोग, WHO से हमारे डॉक्टर ऑफरिन जो कंट्री रिप्रेजेंटेटिव हैं, और इसके साथ साथ फूड सेफ्टी के साथ जुड़े हुए इस विषय के साथ जितने भी लोग हैं आज के, मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड फूड डे 2020 के अवसर पर बहुत सारे ऐसे महानुभाव भी इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं जो इस काम को पैशन के साथ करते हैं। मीडिया के कुछ मित्र हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं, कुछ वर्चुअली जुड़े हैं। मैं हृदय की गहराइयों से आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और विशेष रूप से FSSAI का मैं धन्यवाद भी करता हूँ, उनको बधाई भी देता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ, क्योंकि जैसा कि एक कल्पना होती है कि FSSAI एक टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है और वो नियम कायदे कानून बनाती है, और फिर वो नियम कायदे कानून फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे उसके लिए अपने अधिकारियों के माध्यम से चेकिंग खाली करती है। उस कल्पना से परे FSSAI ने पिछले सालों में विशेषकर एक ईट राइट इंडिया के इर्द गिर्द लोग कैसे अच्छा भोजन करें, अच्छे भोजन के बारे में उनको जानकारी मिले, उसके संदर्भ में समाज के हर वर्ग में, समाज के हर स्थान पर एक आंदोलन विकसित हो, और कैसे उस काम को सफलतापूर्वक करने के लिए समाज में लोगों को ट्रेन किया जाए, मोटिवेट किया जाए, उनमें कंपटीशन की भावना लाई जाए, और समाज में जिन लोगों से हमें हेल्दी हैबिट्स को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे सहयोग की आवश्यकता है, उनको भी कॉन्फिडेंस में लेकर, वो फूड को मैन्युफैक्चर करने वाले लोग हैं, फूड की इंडस्ट्री है, इनको भी सबको साथ लेकर
बहुत ही उत्साह के साथ, ऊर्जा के साथ FSSAI काम कर रही है। और अभी तक जितनी बातें आपने सुनी प्रस्तावना के रूप में, और जितने आपने अभी पब्लिकेशंस को देखा जो कि रिलीज़ किए गए, और फिर पिछले सालों के जो कार्यक्रम, पिछले साल का भी वर्ल्ड फूड डे का भी कार्यक्रम मुझे याद है, हमने एक फूड मेला भी लगाया था, वो भी याद है। तो इन सब विषयों पर बहुत ही गहराई और गंभीरता के साथ FSSAI काम कर रहा है। मैंने कल भी जब FSSAI के अधिकारियों के साथ भारत सरकार के सभी प्रमुख विभागों के सेक्रेटरी लेवल के अधिकारियों की मीटिंग हुई थी, और कैसे एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि देश में जहाँ एक तरफ हमने फूड सिक्योरिटी, इसके जो पैरामीटर्स हैं इनको तो अचीव कर लिया है, लेकिन फूड सिक्योरिटी के साथ साथ कैसे हम न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के जो पैरामीटर्स हैं, यानी सबको पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध भी हो, वो हर तरह से हेल्दी फूड भी हो, सेफ भी हो, सस्टेनेबल भी हो, न्यूट्रिशियस भी हो, उसमें किसी भी प्रकार के किसी भी एलिमेंट की कमी भी ना हो, और वो कैलोरीज़ की दृष्टि से भी पर्याप्त उसमें मात्रा हो। इसको पूरी तरह से संतुलित ढंग से इसको अचीव करने के लिए FSSAI को बहुत सारे लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। कल हम लोगों ने एक यहाँ पर विस्तृत बैठक की थी, और जिसमें भारत सरकार के बहुत सारे प्रमुख विभागों के सेक्रेटरीज़ के साथ FSSAI के अरुण सिंघल जी और इनके सभी साथियों ने मिलकर विचार विमर्श किया। हम लोगों ने अपनी सोच प्रस्तुत किया, और हम लोगों ने कहा कि ये जिस प्रकार से देश ने फूड सिक्योरिटी की दृष्टि से अपने टारगेट्स को अचीव किया है, उसके साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, यानी कि सभी लोगों को जो भोजन उपलब्ध हो सके, देश के 100% लोगों को वो भोजन हम उपलब्ध कराने में सफल हो जो हाईली न्यूट्रिशियस हो, हेल्दी हो, सेफ हो, सस्टेनेबल हो, कैलोरीज़ की उसमें पर्याप्त मात्रा हो। क्योंकि हम सब जानते हैं कि अभी भी देश में बहुत बड़ी संख्या के अंदर लोग मैल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, एनीमिया के शिकार हैं, बहुत सारी माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज़ के शिकार हैं। उसके कारण बहुत सारी हम जानते हैं कि न्यूरोलॉजिकल और दूसरी किस्म की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। और अभी भी जो एवरेज हमारा जो कैलोरिक इनटेक है देश के एक एवरेज आदमी का, वो जितना होना चाहिए उससे काफ़ी सिग्निफिकेंटली अभी भी कम है। इसलिए जो FSSAI जिन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए काम कर रहा है कि सभी के लिए हम सेफ, हेल्दी और सस्टेनेबल फूड जो है ये उपलब्ध करा पाएँ, इसके लिए ये आवश्यक है कि सरकार के सभी विभाग, यानी जहाँ पर फूड खेत में उगाया जाता है वहाँ जो मिनिस्ट्रीज़ कंट्रोल करती हैं, उससे लेकर और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से लेकर और आगे डिस्ट्रीब्यूशन और फिर कस्टमर तक, क्लाइंट तक या एवरेज पर्सन तक, घर तक आता है जो फूड, और फिर जहाँ जहाँ फूड कुक होता है किसी भी रूप में, वो जितने भी आउटलेट्स हैं उन स्थानों पर जो कंट्रोल सिस्टम्स हैं, इन सब के बीच में एक बहुत ही हाई क्वालिटी की सिनर्जी होना बहुत ज़रूरी है। और कल की मीटिंग में हम लोगों ने 1 घंटा इसके ऊपर कई सारे मिनिस्ट्रीज़ ने कमेंट किया, और कई सारी मिनिस्ट्रीज़ के साथ फिर ये तय हुआ कि हर मिनिस्ट्री के साथ हमारा FSSAI और साथ में हेल्थ के लोग मिलकर डिटेल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, और फिर सब लोग मिलकर एक ऐसी रणनीति बनाएंगे कि न्यूट्रिशन सिक्योरिटी का टारगेट कहने को 2050 हो, लेकिन हम उसको 2030 तक कम से कम पूरा करने के लिए काम करें।
और हमें लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसको कर पाना संभव है। मैंने एक बात और कही थी, उसको भी दोहराना चाहता हूँ कि यूँ तो स्वास्थ्य को उस पर दुष्प्रभाव डालने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर उसमें दो चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए और उसके अंदर 2+3 और कर लिया जाए तो शायद हर एक व्यक्ति को स्वस्थ बनाने के अंदर कोई किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो सकती। आज भारत में 2 मूवमेंट्स चल रहे हैं। मुझे लगता है कि इन मूवमेंट्स के ऊपर सारे देश को अगर अपना ध्यान ढंग से केंद्रित करके अगर इनके ऊपर प्रयास किया जाए तो ये भारत के अंदर हेल्थ फॉर ऑल के टारगेट को अचीव करने में ये बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकते हैं। और उसमें एक पहला मूवमेंट है ईट राइट इंडिया मूवमेंट और दूसरा मूवमेंट है फिट इंडिया मूवमेंट। क्योंकि अगर हम अपने स्वास्थ्य का ख्याल फिटनेस की दृष्टि से रखते हैं, पर्याप्त एक्सरसाइजेस करते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, योग मेडिटेशन इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं और साथ में क्या हम खाते हैं, हमको अगर ये ठीक प्रकार से ज्ञान हो जाए कि हमारे लिए क्या स्वास्थ्यवर्धक है, कितना खाना स्वास्थ्यवर्धक है और वो खाना हमको कहाँ से कैसे मिलता है, या अगर हमारे को अपने घर में भी पकाना है तो उसके अंदर क्या क्या सावधानियाँ रखनी है, इसका अगर हमने 2 चीज़ों का आंदोलन पैदा कर दिया देश में, जो कि बहुत कठिन काम नहीं है, सिर्फ उसके लिए जज्बा चाहिए, उसके लिए सोच चाहिए, उसके लिए योजना चाहिए, उसके लिए मिशन के रूप में काम करने का एक प्रकल्प चाहिए। और इन 2 चीज़ों के साथ 3 चीज़ें जो डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है, जिस पे ऑलरेडी काम हो रहा है। आप जानते हैं हम सब कि 2014 से प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत का मिशन जो है लॉन्च किया है। अगर हमारे आसपास, हमारे घर में, हमारे आसपास अगर स्वच्छता का जो कंपोनेंट है उसके ऊपर समाज अच्छी तरह से ध्यान दे रहा है और इसी के साथ साथ हमको जो पानी उपलब्ध होता है वो अगर पोर्टेबल है, स्वच्छ है, स्वस्थ है स्वास्थ्य की दृष्टि से, तो ये दूसरा मूवमेंट है। इसके बारे में भी हम जानते हैं कि ये प्रधानमंत्री जी का बहुत ही पैशन से करने वाला मूवमेंट है, जिस पे उन्होंने अगले 5 साल में सारे देश के लोगों को एक प्रकार से बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोग्राम बनाया है कि कैसे पाइप से जो है पानी साफ़ सुथरा जो है घर घर तक पहुंचाना है। और तीसरा जिसके ऊपर ऑलरेडी काफ़ी काम हो रहा है वो है कि हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को हम कैसे शुद्ध रख सकते हैं। एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री में काम करते हुए हमने देखा है कि एनवायरनमेंट के बारे में भी हमारे सरकार ने बहुत सारे रिफॉर्म्स, बहुत सारे जो गाइडलाइंस हैं, बहुत सारे नए एक्ट्स में परिवर्तन है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में बहुत सारी चीज़ें की हैं। अब उनको भी समाज में कैसे इम्प्लीमेंट करना, तो अगर 2 चीज़ों को जो शरीर के लिए ख्याल करना और 3 चीज़ें जो आसपास के वातावरण के लिए, तो ये 3-4 चीज़ें जो है बहुत महत्वपूर्ण हैं। और इसमें मैं ये समझता हूँ कि जो FSSAI के पास काम है ये सबसे महत्वपूर्ण काम है, ईट राइट वाला। अगर ये ईट राइट और फिट इंडिया हमारा ये 2 चीज़ें भी ठीक से चल रही हैं तो बाकी चीज़ों में कमी भी होगी तो भी हम अपने देश के लोगों को शायद स्वस्थ बनाने में जो है सफल हो सकते हैं। मैं बधाई देता हूँ कि पिछले समय में आपने बहुत सारे इनोवेटिव कार्यक्रम FSSAI ने शुरू किए हैं, खासकर जो फूड सेफ्टी मित्र का कार्यक्रम है, जिसमें कि एक प्रकार से समाज में बहुत सारा हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको भी हम हैंडल कर रहे हैं और इस काम को जो पैशन से करना चाहते हैं ऐसे यंग नौजवानों को हम ट्रेन करते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं। 10,000 से ज़्यादा लोगों को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी गई है और इन 10,000 लोगों के अंदर बताया गया कि उसके बाद उनका एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम में जो लोग पास होते हैं उनको फूड सेफ्टी मित्र बनाया जाता है। फिर उनको एक प्रकार से ट्रेनिंग के बाद उनको ऐसी पावर होती है, वो जगह जगह जाकर गाइडेंस भी करते हैं, फूड के आउटलेट्स को भी एग्जामिन करते हैं, उनको सलाह देते हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त एक तरह से मुहिम है जो गेम चेंजर सिद्ध हो सकती है आने वाले समय में। दूसरा जो मैं हमेशा कहता था, मुझे खुशी है कि एक ऐसा पोर्टल जो कि नेस्कॉम के माध्यम से FSSAI ने क्रिएट कर दिया है, जिसके माध्यम से, क्योंकि ये हम लोगों को हमेशा इस बात पर बहुत दुख होता था और जब ये वर्ल्ड फूड डे इतने सालों से मनाया जाता है उसके बावजूद भी देखते हैं कि
घर से लेकर और होटल तक और रेस्टोरेंट तक और शादी तक और हर फंक्शन तक सब जगह पर इतना ज़्यादा खाना हम देखते हैं कि बनता है, वेस्ट होता है, उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, उसका सही इस्तेमाल नहीं होता है। और देश में जो है कितने करोड़ों बच्चे जो है वो रात को जो है भूखे पेट सोते हैं या ठीक प्रकार से उनको पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। तो ये जो नेस्कॉम के साथ मिलकर FSSAI ने पोर्टल प्रारंभ करके जो सरप्लस या पोटेंशियल वेस्ट होने वाला जो फूड है, इसको सही स्थान से सही समय पर कलेक्ट करके और सही स्थान तक पहुंचाने की जो मुहिम शुरू की है, इस मुहिम को भी बहुत बड़ा आंदोलन बनने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूं कि अगले 1 साल में जब हम लोग अभी तो इसको एक मॉडल के रूप में, सफल मॉडल के रूप में हम लोग विकसित कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में इसको हमें कोशिश करना है कि देश के हर प्रांत में ये ऐसा मूवमेंट है जो लोगों को अगर एक बार ध्यान में आ जाएगा, लोगों को इसके लिए मोटिवेट और शिक्षित कर दिया जाएगा, लोगों को ये व्यवस्था समझा दी जाएगी, तो देश का, समाज का हर व्यक्ति, हर स्वयंसेवी संस्था, हर परिवार इस मूवमेंट के साथ जुड़ना चाहेगा, क्योंकि कोई भी किसी भी भोजन को वेस्ट होते हुए देखना नहीं चाहता। और हम सब जानते हैं कि जो वेस्टेड फूड है, जहाँ एक तरफ खाना वेस्ट होता है, उसके साथ साथ जो उसमें से जो दूसरी जो टॉक्सिक गैसेस, जिनको ग्रीन हाउस गैसेस कह लीजिए, या दूसरी चीज़ें जो उसमें से निकलती हैं, वो एनवायरनमेंट के लिए भी जो है बहुत एक प्रकार से दुखदाई हैं, तकलीफ़दायक है। उसमें से बहुत सारी चीज़ें जो इमर्ज होती हैं, वो किसी भी रूप में जो है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक्टिविटी नहीं है। इसलिए उसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से हैंडल करना, पिछले समय में हमें याद है कि हम लोगों ने जब यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की बड़ी मीटिंग हुई थी, सारे साउथ ईस्ट एशिया के हेल्थ मिनिस्टर्स आए थे। उन हेल्थ मिनिस्टर्स के सामने हमारे FSSAI ने एक बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन किया था, बहुत सारी चीज़ों को लॉन्च किया था, सेलिब्रिटीज़ का कैंपेन लॉन्च किया था। और थोड़ा सा अपने खाने में हम नमक कम कर दें, थोड़ा सा चीनी कम कर दें, थोड़ा सा फैट कम कर दें, या ट्रांस फैट पे ज़्यादा ध्यान दे दें। तो इस मूवमेंट को बड़े पैमाने पे मूवमेंट बनाने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया। और उसके बाद हमें ध्यान है कि जो WHO के अधिकारियों ने भी कहा कि इसको सारे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर भी जो है इसको हम मूवमेंट के रूप में बढ़ाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद वो दिन भी मुझे याद है जब दिल्ली के अंदर लगभग 1,500 से ज़्यादा जो बड़े बड़े होटल्स के जो देश भर के शेफ्स थे, उनका हमने कार्यक्रम किया। वहाँ पर जो है ये ट्रांस फैट्स को कम करने की दृष्टि से एक लोगो को इशू किया, और लोगों को इशू करने के साथ साथ ये संकल्प लिया सारे शेफ्स ने कि हम अपना जो ट्रांस फैट की जो परसेंटेज है वो अपने खानों में, अपने पकाने में इसमें कम करेंगे। हमने बहुत महत्वाकांक्षी संकल्प लिया है कि WHO तो कहता है कि 2023 तक 2% हमें ट्रांस फैट जो है अलाउ करना है, लेकिन हम 2022 तक ही जो है उस परसेंटेज तक पहुंचना चाहते हैं। और मुझे अभी खुशी हुई है जानकर, जब अरुण सिंगल जी ने बताया कि जब सर्वे किया गया तो बहुत सारे जगह पे देखा कि अभी, जबकि कानूनन शायद ज़रूरी इस समय नहीं है, तो भी बहुत सारे जो फूड के मैन्युफैक्चरिंग के, फूड के जो प्रोसेसिंग और दूसरे चीज़ों के आउटलेट्स हैं, वहाँ जो फूड उपलब्ध है उसमें 2% के आसपास ही ट्रांस फैट है। और ज़्यादातर में जबकि 5% हमारा आज कानूनन तौर पर शायद अलाउड है, फिर भी 5% से भी बहुत जगह पर कम है। तो ये अपने आप में मेरा ख्याल से काफ़ी बड़ी जो है ये उपलब्धि है। हर दिशा में आप सब जानते हैं कि मैंने व्यक्तिगत तौर पर भी 250 दिन तक लगातार जो है ईट राइट इंडिया का जो है ट्विटर के ऊपर मूवमेंट शुरू किया था। अभी हम सोचते हैं दोबारा से उस मूवमेंट को भी हम लोग प्रारंभ कर सकते हैं लगातार। और आज खासकर जो ये पब्लिकेशंस जो है जो लॉन्च किए गए हैं, अभी किसी भी एक समझदार पढ़े लिखे फैमिली के लिए अगर इसको हम उस तक पहुंचा दें, शायद आज के डिजिटल युग में लोगों तक इसको पहुंचाना इतना आसान हो गया है कि किसी के पास ये प्रिंटेड कॉपी भेजने की ज़रूरत नहीं है।
अगर जानकारी दे दी कि इसमें आपके लिए मतलब की बात है, इससे आप असेस कर सकते हो कि क्या आप ठीक भोजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो आई एम श्योर कि 90% लोग इसको पढ़ना चाहेंगे। अपनी जो आदतें हैं उनको निश्चित रूप से सुधारना चाहेंगे। तो प्रयास ये होना चाहिए कि जो भी हमारे पब्लिकेशंस हैं, वो पब्लिकेशंस जो हैं वो सही स्थान पर बड़ी मात्रा में पहुंच जाएं। टारगेट तो ये होना चाहिए कि भाई एक चीज़ आज हमने जो निकाली है, ये जब अगला वर्ल्ड फूड डे आए तो कैसे हम देश के तब तक एक एक आदमी को इसको पहुंचा दें। आज किसी जो तथाकथित इलिटरेट परिवार में भी जो बच्चे होते हैं वो बहुत एक्टिव हैं, बहुत एग्रेसिव हैं, और वो जो पढ़ाई लिखाई करते हैं वो ऐसी जानकारियों को जो है अपने टेलीफोन में ढूंढते हैं, लेते हैं। सब लोग आजकल यूट्यूब पे जो है इतनी इंक्विजिटिव लोगों का माइंड है, क्यूरियोसिटी है, सौभाग्य से हेल्थ के प्रति इतनी ज़्यादा जागरूकता है, तो लोग कोई भी चीज़ जो हेल्थ को उनके सेफ्टी के लिए स्ट्रेंथन करती है, हेल्थ को बेहतर करने में हेल्प करती है, उसको पढ़ने में किसी को कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। फिर ये जो फोर्टिफिकेशन के बारे में बताया गया कि कानूनी दृष्टि से भी इस प्रकार के हमारे तरफ से प्रयास हो रहे हैं कि इवन जो है राइस वगैरह के अंदर भी जो है हम फोर्टिफाइड करें, और साथ में जो दूसरी जो चीज़ें हैं उसमें। अब इसके बारे में जो ये स्टेट्स के लिए, यूटीज़ के लिए इतनी डिटेल्ड गाइडलाइंस हैं, स्टेट्स के जो हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर्स वगैरह हैं उनके साथ भी हमें निरंतरता के साथ इन चीज़ों को परस्यू करने की ज़रूरत है। ये साथ में जो ये ऑरेंज बुक, ये तो ईट राइट कैंपसेस पे ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं, ईट राइट स्कूल्स पर हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, हम ईट राइट कैंटीन्स के ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अगर ये चीज़ें बड़े पैमाने पर जिस दिन हो जाएंगी, अभी जंक फूड को बैन करने के हमने स्कूल के बच्चों के लिए नियम ऑलरेडी बना दिए हैं। अगर स्कूल में जंक फूड बैन हो गया, बच्चों को ईट राइट का कंसेप्ट समझ में आ गया, स्कूल की कैंटीन के अंदर डिलीशियस और न्यूट्रिशियस और अफोर्डेबल इस प्रकार की भोजन की या दूसरी भी जो बच्चे चीज़ें खाते हैं उसकी अगर व्यवस्था हो गई और उसकी जानकारी पर्याप्त मात्रा में हो गई, और ये काम को अगर स्कूल के बच्चों ने या कॉलेज के बच्चों ने हाथ में ले लिया, तो मुझे ज़रा भी शक नहीं है कि किसी भी प्रकार से, अब ये कैंटीन की हाइजीन के बारे में है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब ये सारे पब्लिकेशन, मुझे बहुत खुशी हो रही है इनको देख के कि बस सिर्फ इस खुशी को इसकी चरम सीमा तक पहुंचाने के लिए इनको लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जितने भी लोग FSSAI में काम करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आज बताई गई हैं, मैं सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर चर्चा नहीं करता क्योंकि इतने सारे 7, 8, 9 पब्लिकेशंस तो आज ही किए गए हैं, और जितने भी फंक्शन में मैं जाता हूँ हर एक फंक्शन में कम से कम आधा दर्जन पब्लिकेशंस होते हैं। इसका मतलब कि हमारी तरफ से लोगों को सही जानकारी सही समय पर देने के लिए जो प्रयास आवश्यक हैं, जो प्रोफेशनल प्रयास आवश्यक हैं, उन प्रयासों में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। अब केवल आवश्यकता है कि जो कल हमने मीटिंग की थी, उस मीटिंग का भी उद्देश्य यही था कि ये टोटल होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से कैसे हम इसको एक बड़ा आंदोलन बना सकते हैं। अगर ये विषय HRD मंत्रालय का, मान लीजिए एजुकेशन मिनिस्ट्री का जो है ये विषय बन जाए, तो देश के एक एक बच्चे तक एक एक जानकारी पहुंचाना जो है वो कितना एक प्रकार से सरल हो जाएगा। जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इसकी गहराई को समझ लेगी, जो कौन से हमारे को एग्रीकल्चर के अंदर फार्म में क्या प्रोड्यूस हमारा होना, उसके अंदर कोई दूसरी चीज़ों के रिप्लेसमेंट के मैकेनिज़म्स हमारे पास आ जाएंगे कि किसी को अगर फार्मर को हमने ये सिखा दिया कि इसकी जगह आप अगर फ्रूट उगा लीजिए या ये चीज़ उगा लीजिए जो ज़्यादा जो है हेल्थ के लिए यूज़फुल हो सकती है और उसमें भी आपको उतना ही कमाई होगी, तो ये सारे मल्टीपल लेवल्स पर हमारे को काम करने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि आज का जो ये अवसर है, ये हम सब जानते हैं कि खाने के संदर्भ में तो ये कहा भी गया है कि भाई जैसा आप भोजन करेंगे और वैसा ही आपका तन भी उसी हिसाब से होगा, मन भी उसी हिसाब से होगा, आत्मा की शुद्धि भी उसी हिसाब से होगी, और आपके
अगर खाना आपने अच्छा खाया है, भोजन के अंदर अगर आपके सात्विकता है, भोजन आपका एक तरह से स्वच्छ है, पवित्र है, हेल्दी है और सात्विक है, तो आपका मन और आपके विचार, और जब विचार सात्विक होंगे तो विचार सात्विक होने के साथ साथ आपका कर्म भी सात्विक हो जाएगा। और शायद आज देश को इसी प्रकार की आवश्यकता है। एक अभूतपूर्व असाधारण प्रतिभा वाला, जज्बे वाला एक प्रधानमंत्री हमें मिला है और वो प्रधानमंत्री इस देश को एक नया इंडिया डिलीवर करना चाहते हैं। थोड़े समय के बाद वो भारत को विश्व गुरु भारत बनाना चाहते हैं। उसके लिए वो हम सबको अपने अपने लेवल पर जो जो हमारे ज़िम्मे काम है वो करने के लिए सपना देखने को प्रेरित करते हैं। उस सपने को साकार करने के लिए वो हमारे को योजनाएं बनाने के लिए कहते हैं और फिर उन योजनाओं को वो पर्सनली इम्प्लीमेंट करते हैं। और 6 साल में हमने देखा है कि जो जो योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाई, उनको अपने स्वयं मॉनिटरिंग से उन्होंने सफलता की चरम सीमा तक ले जाकर दिखाया। चाहे वो डिजिटल इंडिया हो, वो भी देखिए कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, चाहे वो स्वच्छ भारत हो, चाहे वो जन धन की योजना हो, चाहे वो हर उस गांव में बिजली पहुंचाने का काम हो जहां 70 साल में बिजली नहीं पहुंची थी, चाहे देश के हर व्यक्ति को मकान देने का विषय हो, चाहे वो आयुष्मान भारत की योजना हो, चाहे वो गरीब महिलाओं के लिए एक जो स्वच्छ या स्वस्थ जो पद्धति है गैस के माध्यम से जो उनको दूसरी बीमारियां होती उनसे बचाने का विषय हो। और सब विषयों पर हम देखें तो उसमें पैरामीटर्स जो है वो सफलता की एक्सट्रीम्स पर पहुंचे हुए हैं। 1 रुपये के बदले 15 पैसा मिलता था इस देश में। एक प्रधानमंत्री कहता था आज 1 रुपया बटन दबता है दिल्ली में, उसके बदले में 100 पैसा जो है गरीब आदमी के खाते में डायरेक्ट देश के अंदर पहुंच जाता है। तो ये एक बहुत ही आइडियल समय है भारत के लिए कि प्रधानमंत्री भी ऐसे हैं जो भारत को बहुत ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं। और हम सब लोगों का मैं समझता हूँ कि ऐसे मौके पे अगर हमने अपने जो कर्म है उसकी पूर्ति ठीक प्रकार से की, जो हमारे ज़िम्मे काम है, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि इसको FSSAI को ये तो इसके काम को तो फादर ऑफ द नेशन का भी उनके विचार और उनके कर्म से बहुत सारा आशीर्वाद उनको, उन्होंने इसी के बारे में सारा जीवन अपना जो है समर्पित किया, इसी के बारे में आग्रह किया। तो FSSAI को अपने को कोई साधारण संस्था नहीं मानना चाहिए। FSSAI कैन बी गेम चेंजर, आई रिपीट, दे कैन बी गेम चेंजर। इस तरह से जो फिट इंडिया की मंत्रालय है वो भी गेम चेंजर हो सकती है, उसी तरह से FSSAI भी गेम चेंजर हो सकती है। और इसीलिए हमने सारे सरकार के सभी लोगों को कहा है, सब मंत्रालयों को रिक्वेस्ट किया है कि आप हमारे इस गेम चेंजर मंत्रालय के साथ मिलकर काम करिए और ये सुनिश्चित करिए कि देश के सभी लोग अच्छी तरह से स्वस्थ हों। और जब भारत पूरी तरह से स्वस्थ होगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह का भारत के पास अपना DNA है, जिस तरह का भारत के पास अतीत का गौरवशाली इतिहास है, जिस तरह की हमारे को शिक्षा भोजन के बारे में भी अपने ऋषि मुनियों से मिली है, जिस तरह का हमारे को स्वच्छता का वातावरण, इसके बारे में हमारे ऋषि मुनियों ने भी जो संस्कार दिए हैं, वो सारी चीज़ों को भी याद करके अगर हम उनको इम्प्लीमेंट करेंगे और लोगों को उसको फॉलो करने के लिए प्रेरित करेंगे। सौभाग्य से आजकल वातावरण देश में ऐसा बना है पिछले सालों में कि लोग अपने हेल्थ के प्रति, अपने भोजन के प्रति काफ़ी जागरूक हुए हैं। और कोविड ने हमारे सामने और नए चैलेंज प्रस्तुत किए हैं। कोविड के कारण नया न्यू नॉर्मल क्रिएट हुआ है और इस नए न्यू नॉर्मल में लोगों को भी एक प्रकार से आदत पड़ गई है कि बहुत सारी चीज़ें वो अपने टेलीफोन में ही देखना पसंद करते हैं। तो ये आदत हमारे लिए जो है ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकती है, क्योंकि हमने अगर हर एक अपने मतलब की चीज़ जो उनके स्वास्थ्य के हित के लिए है वो उनके टेलीफोन के अंदर पहुंचा दी, तो समझ लीजिए कि हमने अपना बहुत बड़ी मात्रा के अंदर अपनी जो जिम्मेदारी है उसको निभा लिया। आज के इस अवसर पर बातें बहुत सारी हैं, बहुत सारे आपने काम किए हैं, हर एक की चीज़ की चर्चा मैं नहीं करना चाहता। बहुत सारे अवार्ड्स आपने इनिशिएट किए हैं, बहुत सारे
चैलेंज राउंड और बहुत सारी बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं जिनके अलग अलग इनोवेटिव तरीके से बहुत सारे काम शुरू हुए हैं, ये सब कामों को और बड़े पैमाने पर बढ़ाना। और आप सब लोग जो स्क्रीन पे भी दिख रहे हैं, सबसे मेरा कहना है कि आप सोचते रहिए, हर समय सोचते रहना। नए आइडियाज़ जो इमर्ज होते हैं उनको आप देते जाइए, उनको इम्प्लीमेंट कराते जाइए। तो इसी से धीरे धीरे एक बड़े आंदोलन की और जागरूकता को विकसित करने का काम होगा। मैं आप सबके बेहतर स्वास्थ्य की कामना के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। सर, बहुत बहुत आभार आपके मार्गदर्शन और एनकरेजमेंट के लिए और हम सबको प्रेरित करने के लिए, थोड़ा और बेहतर करने के लिए। थैंक यू सो मच सर फॉर योर काइंड वर्ड्स। I also thank our Honorable Minister of State, Shri Ashwini Kumar Chaubey ji, for joining in us with today and participating in the session. I would now like to invite Shri Shobhit Jain, Executive Director, FSSAI, to kindly deliver the vote of thanks and bring the event to a close. Dr. Jain, over to you, sir. On behalf of FSSAI, I would like to extend heartfelt thanks to all the participants of today's event. I extend our gratitude to Dr. Harsh Vardhan, Honorable Union Minister for Health and Family Welfare, for sparing his valuable time and sharing his inspiring thoughts and enlightening us with his thoughtful words. Sir, we assure you next year we'll meet you again with new ideas, new achievements and far greater things that you have inspired us today. I thank Shri Ashwini Kumar Chaubey, Honorable Minister for State for Health and Family Welfare, for sparing time from a very hectic tour and joining us for this event. I personally extend my gratitude and regards to Dr. Rodrigo Orfrin, WHO representative for India, for such valuable insights about WHO replace strategy to eliminate trans fat. I place my heartfelt thanks to CEO FSSAI Shri Arun Singhal for sharing his thoughtful words and also for spearheading the efforts of FSSAI. Today, we are joined by senior officials from the ministry, FSSAI, food safety commissioners from states, food industry, their associations, development partners, FSSAI professional networks. I thank you all and everybody for joining us on this occasion. Stay safe and stay healthy. Thank you.